74th. Okay, this is a very controversial one and we have only 5 minutes. It will take entire session maybe. It is Vado Navalambhyah. Okay? Simple. भक्त को वाद विवाद में नहीं फंसना है. भक्त एंड वाद विवाद कैन नेवर बी टुगेदर. अगर वाद विवाद में हो तो पूर्ण भक्त नहीं हो अभी. ओके, सिंपल. विवाद, भक्त इक्वल्स टू प्रेमा, विवाद इक्वल्स टू तर्क, बुद्धि. और जहां बुद्धि आया, भक्त क्या करेगा? भक्त का भाषा प्रेम का भाषा है और ये वाद विवाद जो है वो तर्क वाला है. सो वाद विवाद के ऊपर चर्चा हम लोग बहुत कर सकते हैं. द होल डील इज we can keep discussing and arguing. There is a difference between vivada and samvada. Okay, vivada is where there is a argument. Okay, I say one thing, you say one thing, and we try to convince each other of something, whatever it is. That is vivada. Funny part is we can argue from both sides and win. If you are little intelligent, not much, we can sit from both sides and argue and win both sides. अभी परमात्मा है कि नहीं है, इसके ऊपर अगर थोड़ा बुद्धि लगाया है ना, दोनों साइड से बैठे आर्ग्यू कर सकते हैं. I can sit here and argue, I can sit there and argue. What does it prove? Next sutra says that only. Bahulya. So it's, the whole thing is Bahulya Avakashatvad. It gives an opportunity. It's indecisive. Aniyatahatvacha. It is always indecisive. Anything you start arguing with, maximum what you can do, we rarely convince another. They don't get convinced. Nobody gets convinced. Vaad, vivad और भक्त अलग अलग है. Don't confuse and bring them together. विवाद किया यानी भक्त, हम लोग भक्ति छोड़ दिया वो मोमेंट में. भक्त प्रेम, सिर्फ प्रेम का बात करता है, प्रेम से व्यवहार करता है. वो वाद विवाद में बिल्कुल नहीं फंसता है. बिकॉज तर्क लगाया, यानी मैंने बुद्धि को लाया, बुद्धि लाया तो मैंने कृष्ण को साइड में कर दिया. What is the point? What is the point of trying to convince a blind man about the sun? We can say वो मून है ना, ऐसा दिख रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है, उसमें स्पॉट है. उसको क्या कन्विंस करना है? उसको नहीं दिख रहा है, फॉग में है. वो फॉग निकालने का कुछ बंदोबस्त कर सकता है तो करो. खिड़की विड़की खोल के धूप वूप गुरु के पास चिपका दो, उसको एक दीपक जला दो. वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स बट वी कैन नॉट विन एन आर्ग्यूमेंट. नेवर. आर्ग्यूमेंट कभी विन नहीं होता. इट गिव्स अ टेम्पररी satisfaction maybe, but somebody else comes and pulls you down because your argument is also arguable by somebody who knows little bit more than you. So what's the point? वाद विवाद भक्ति में बिल्कुल नहीं आता है. It's a statement. It's not even a discussion here. वादो नावलंब्यः. नावलंब्यः means, अवलंब्यः means not prescribed, बोलता ना ऐसा. Not prescribed for a भक्ता. भक्त and वाद विवाद बिल्कुल मैच नहीं होते. संवाद is where we do all together. Like तुझे पता है, हाँ मुझे ये हो रहा है, तुझे, all this is samvada. When we are together discussing the same thing, same feelings, it's beautiful. It is samvada. Increase the samvada and forget about the vivad. So वाद बिल्कुल मत करो, बिकॉज हमारे भक्ति के ऊपर वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है. फिर भक्ति जो स्प्राउट हो रही हो नहीं हुई. So don't restrict that. Don't get into arguments. Any arguments. Each one is right from where they are. Wherever they are right. Who are we to say that they are wrong? How can we say that? We cannot. We cannot say. It's like questioning Paramatma himself. कि तूने ऐसा कैरेक्टर कैसा बनाया? Do we have a right to question? No. One cannot become like another again.
सो द होल डील इज, जो जैसा भी है वो उसको उसी ने बनाया है, कोई कारण है, जब जरूरी है वो हो जाएगा जो होना है. Don't convince, don't argue, don't push, don't do anything, don't try to convince. Never try to convince anybody. Why we get into this is because we are ourselves not sure, maybe. Maybe we are not sure, so with the argument maybe we try to get some points wherein we can assure ourselves that this was right. There are various things to this issue. It's a psychological issue because I want proof. So I keep arguing and discussing because I want proof. I am not assured till now. I don't have an experience. If I have an experience, then it doesn't matter who says what. It really doesn't matter. So our thing is going to be to get the experience. Not argue. Don't argue. And whoever, whatever anybody is doing, let them do. If you really feel somebody is in trouble and you need to help them or do something like that, light a lamp. उसको दिए की बाजू में बिठा दो, गुरु की बाजू में बिठा दो, ताकि वो गर्मी से शायद उसका भी दिया जल जाए. शायद, नो गारंटी, फिर भी वो ठंडा ठंडा तेल डाल के बैठ जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते. बट स्टिल वी डोंट नो, मे बी. So take, go along with the guru or take them to ashrams, or you yourself do so much that maybe your own garmi will help them, your own tapas will, vibrate in the house to the extent that everybody is touched by it. No convincing, no arguing, don't get into that. It will only, 1 घंटा हम लोग बैठ के तपस्या करते हैं, 2 घंटा नाम जप करते हैं, आधा घंटे का आर्ग्यूमेंट, 10 मिनट का आर्ग्यूमेंट पूरा निकल गया. पूरा जो एनर्जी चढ़ा था उसका डबल पूरा उतर जाता है. Don't get in, be very alert when you are anywhere other than yourself. Even with yourself you will start arguing sometimes, but at least we have a scope of coming back. Wherever you are, and as soon as you see the sparks or the bubbles of an argument, immediately, I told you last time, tel laga ke baith jao, non-stick. Because there is no other way. Maybe you can't run away from the place. If somebody wants to argue, let them argue. आराम से, surrender. उसको नहीं, अपना भक्ति, अपना दास्य भाव लेके आओ और surrender कर दो. कृष्णा, तेरा लाल है, तू संभाल. Finish. You know best. We should. The whole deal of a bhakta is clear the place. हम लोग जो जगह पकड़ के बैठे हैं ना, उधर कृष्ण को ऑपरेट करना है. Empty the space for Krishna to sit. Empty the space for Krishna to speak. Empty the space for Krishna to operate through you. हम लोग जब तक जगह जमा के बैठे हैं, कृष्ण तो साइड में बैठ चाहिए तो वो नहीं बैठेगा. हमको हटना है. हटना is bhakta. The one who can vacate the space for Krishna will be a bhakta. Allowing Krishna, allowing divinity to operate through you. All the birds and the flowers are more intelligent than us. They allow the divinity to operate through them. We use our intellect and stop divinity. Okay?